Today we are going to discuss, or we are going to in remaining sessions we will be trying to cover up all the practicals. Whatever the sessions are remaining before unit test, we will try to cover all the practicals. Today we will be discussing the first experiment, that is to study and implement the internal commands of the Linux operating system, open operating system, that is ls, chdr, mkdir, chmod, chmod, chgrp, that is chmod, chgroup, ts. Along with this, if any command which is required to run for this, that we will be discussing. Now, almost all commands are very, we can say, familiar, or a few commands we can say very familiar, like ls command, or we can also say mkdir. These are uh, very familiar. Also, we have executed in previous year also, in first year also, if you have um, attended the hardware practical session, then in that also we have discussed about the basic Linux commands, right? But today, now we need to discuss these commands with respect to the file directory, and how we can handle the files, how we can manage the directories by using the terminal. Okay. Now this manual is already with you. You already have written, almost most of the students have already uploaded on the Moodle also. So I'm hoping you have studied, or you have read it, this all the written contents. Okay. Directly I will be starting with the commands. Ubuntu system, Linux operating system, is it an open operating system? Open hai, that means it is free for everyone. No any license is required. No any purchasing is required, right? Also, some part of the software, or we can say some part of the coding part of your operating system is already open, in which the user can do their implementation. User can change, or user can modify their operating system. This is not allowed in the closed operating system like Windows, right? Also, if we want to use the operating system like closed operating system, then we need to purchase them. And this is as compared to the Windows, always it is said that open operating systems are more secure than the closed one. And these are the different flavors, so we can say, or the different systems which are available under the open operating system: Ubuntu, Linux, Red Hat Enterprise, Linux Mint, Debian, Fedora. SUSE is one more there. These are all the flavors of the open source operating systems. Okay, starting with the very basic commands, then let me switch this screen with the terminal. Just a minute. Our session will be 40 minutes of session, so keep marking your attendance. Do not forget to mark your attendance. Okay. Is the screen visible? Is it visible now? The letters are Yes, visible? Yes. ma'am. Okay. Okay. So the very first command, that is ls. ls is used to list out the contents, whatever in which directory you are present. That is, now I am present in my home, that is in my Sophia directory, that is my main directory. So in this, whatever the files or the directories will be available, the contents which are available, those will be displayed by using simple ls command. See, okay. Let me reopen this. For this, I need to, just a minute.
I didn't switch to Ubuntu. That is why it was showing the error. Okay. Now let me run the ls command. Now ls, as I said, it will display all the files and the directories which are available in this current working directory. Okay. Now as you can see, this highlighted, or the directories which are available are highlighted with the blue color: code, programs, and the trial. Now this without boxing are created by the users. Okay, and these are created by the system itself. Okay, these are all the system related directories which are inbuiltly created, so that is why it is highlighted like this, like a box. Now this trial is a directory which is created by the user. Now I suppose these are the one which is easily available, or easily it can be visible. But I want to see the each and every file. If any hidden contents are there, everything will be displayed by using the ls-a command. So any directory, this dot is nothing but the root directory, and these everything, any whenever we are running any processes, by default that processes create some sub processes, some sub directories will be created. Those all will not be displayed using the only ls command. List command से सिर्फ वो सब के सब display नहीं किया जाता. So in such case you can use the -a command. So it will be open, it will open all the extension, it will open all the files and the directories which are present in all the extensions. So ls-a. Now suppose I want to display this, or I want to view this content. अभी तो यहाँ पे बहुत कम है ना फाइल्स एंड डायरेक्टरी, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट एनीथिंग, या फिर मुझे कुछ भी फाइंड आउट करना है, इसमें से कोई फाइल चाहिए तो मैं आसानी से इसमें से ढूंढ सकती हूँ. बट आई वांट टू प्रॉपर, सपोज मैं बहुत सारे फाइल्स है मेरे पास, मुझे कुछ अच्छे से मैनेज करके देखना है, कुछ ढूंढने के लिए हिरार्की टाइप चाहिए, देन आई कैन सिंपली यूज लाइक ls-c if I want to see this all the files and directories in the column wise. अभी मेरे पास इतने ही directories है, तो ये आपको एक ही लाइन में जैसे शुरुआत में दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है. बट यू हैव अ लॉट ऑफ फाइल्स अवेलेबल इन योर सिस्टम, देन it will show you in a column wise manner, in a proper structure. Okay. Now suppose I want to display only directories. So ls-d is the command by using which you can display. Now ls-d, the main directory is displayed. ls with the -d command. Now suppose I want to display all the files and directories by using the commas. मुझे differentiate नहीं हो पा रहा है कि क्या कैसा है, कहाँ पे इसका end हो रहा है, डॉट के बाद डॉट अलग से है या बैश rc भी इसके साथ है. I want to separate out these all the files and directories by giving the commas there. So I can just list out like -m command, ls-m. So it will be displayed with the commas given in between that particular files and the directories. Now suppose मुझे इसमें से नहीं समझ में आ रहा है. नाउ आई टोल्ड यू दैट दिस ब्लू कलर आर द डायरेक्टरीज. ओके, बट आपको समझ में नहीं आया, आपको कलर कोडिंग नहीं पता है, देन इन दैट केस you can use the ls-p command. It will give you the output with the slash after every directory. अगर आपके यहाँ पे डायरेक्टरी अवेलेबल है उसके बाद एक स्लैश लगा आएगा इन द आउटपुट. सो एज यू कैन सी ये जो डायरेक्टरीज हैं इसके बाद एक यहाँ पे बैक स्लैश ऐड हो चुका है. So you can identify these are the remaining are the files and these are the directories like this. Now suppose जैसे कि जो recent बनाया है, let me show you. Touch is the command by using which we can we can create a file. Okay, suppose I'm creating a file 10. Okay, now I'm displaying this by using ls-f. Okay, now what this shows, this will show you all the text files. Whatever the files are present, only files will be displayed. मतलब एक फाइल के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा by using the -f. ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन यूज करके आप ls कमांड यूज कर सकते हो. If you want to know anything about any command, then simply you can run the command man, which is used for the manual purpose. किसी भी एक जो कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, राइट, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. लाइक दैट इन Ubuntu operating system or any open operating system, we can implement this command that is the man for manual. So about which command you wanted to know, that you have to just write
Like suppose I want to know about the mkdir, man mkdir, then it will give you the details about that command, whatever the we can say arguments you can write in front of that particular command, and what it will give you the output. Everything is mentioned in that particular information of that manual page. Okay, now if you want to quit, if you want to go back of this page, then you can simply enter the q letter, that is for quit. Okay, that is the ls command first we have discussed. Now as I say, okay, now if I want to clear this, the previous contents whatever I have written on the terminal, simply run the clear command, it will clear out entire things. अब क्लियर करता है मतलब वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है ऐसा नहीं, बट इट विल कम टू द न्यू लाइन ऑफ द टर्मिनल. ठीक है, नए पेज पे आपको, नए लाइन पे आपको लाके it will stop. Now that is clear command. Now whenever I am saying files will be created, files will be modified, files will be deleted, there are different things we can do if you have the rights to do with that particular file and or with that particular directories. Okay, but now how to check the particular specifications or the rights which are available with that particular file? How we can check that? That is also we can check by using the ls command. Simply what you need to do, regarding which file you require the information, that file name you should know. Okay, and you can simply write ls hyphen l and that file name. ठीक है, अब मैंने फाइल कौन सी क्रिएट की थी, टच कमांड से 10 नाम की फाइल एक क्रिएट की थी थोड़ी देर पहले, राइट? सो ls-l and the 10 is my file name, right? So it will give you the display, it will display output like this, hyphen rw, then we have again hyphen r, hyphen hyphen r, hyphen hyphen, then this is the root directory, then these are the usernames. This Sophia is the first Sophia content is showing you the username. Then this second name is telling you about the group name, कौन सी group के अंदर ये आता है. And then this file was created first and not modified at all, and this was created on 26 April at this particular time, and the file name is this. So this output will be displayed. Now what is this hyphen read write hyphen read write hyphen hyphen hyphen? Now as you can see in the output, as I said, this shows the file permissions. Okay, the file permission, and this is the owner, or we can say the creator of this particular file. Okay, the second term is the creator of the file. Then the third term is a group to which that particular owner belong to. ये जो ओनर है जिसने ये फाइल बनाई है, ये ओनर किस ग्रुप से बिलोंग करता है. ओके, ये यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा. एंड देन द लेटर ऑन द रिमेनिंग थिंग्स विल टेल यू द डेट ऑफ द क्रिएशन. नाउ ये परमिशन जो है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जो परमिशन है, इट विल गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये रीड राइट शुरू होने से पहले, रीड राइट के स्टार्ट से यहाँ पे परमिशंस दिखा रहा है, लेकिन सबसे शुरुआत में ये एक जो हाइफन है, दिस विल टेल यू द फाइल टाइप. अब फाइल टाइप मतलब क्या होता है? देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द फाइल टाइप. इट कैन बी आइदर रेगुलर फाइल विच विल बी डिस्प्लेड विद दिस हाइफन. इट माइट बी अ डायरेक्टरी विच विल बी डिस्प्लेड विद द डी. अगर ये डायरेक्टरी होती, 10 अगर डायरेक्टरी होती तो क्या होता है, यहाँ पे डी आता इस हाइफन के जगह पे, शुरुआत वाले हाइफन की जगह पे. And if it is a link, then it will be displayed with the I. Okay, so this first hyphen is telling you about this is a regular file, not a directory. This is simply a file, so it is displaying with the hyphen. Now the next is the next rw hyphen. Okay, rw hyphen. These 3 terms are related to the file permission of the user. यूजर मतलब जो इस फाइल का ओनर है. इस फाइल का ओनर अब सोफिया थी, राइट? सो इस ओनर के जो भी परमिशंस है रिगार्डिंग दिस फाइल, दोज आर मेंशन्ड विद दिस rwn हाइफन. ना rwn हाइफन मीन्स रीड राइट, एंड यहाँ पे होता है एग्जीक्यूट. अब यहाँ पे अगर हाइफन लगा हुआ है या फिर कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स that particular execute permission is not there
to that particular user. ओके, जहां जहां हाइफन लगा होगा इसके बाद में, इस परमिशन के अंडर, वहां पे अगर हाइफन है दैट मीन्स देयर इज नो परमिशन टू डू दैट. अभी यहाँ पे सेकेंड जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म समझ में आया, द ओनर ऑफ द फाइल whoever is there, whatever the permissions are there, that will be displayed in this first read write hyphen. Okay, उसको permission है read करने का, उसको permission है write करने का, but that user is not having the permission to execute. तो वो परमिशन किसको रहेगी, अगर यूजर को भी नहीं है तो वो रूट को परमिशन रहेगी. ठीक है, रूट यूजर को. देन द सेकेंड टर्म यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है, रीड हाइफन हाइफन. ठीक है, रीड हाइफन हाइफन. नाउ दिस इज द फाइल परमिशन ऑफ द ओनर्स ग्रुप. ओनर्स ग्रुप मतलब जो भी, जैसे कि रूट का जो परमिशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो यूजर है, ये इसके ऊपर भी तो एक रूट डायरेक्टरी, कोई रूट यूजर रहेगा ना, वो उस ओनर के ग्रुप का, ओनर का ग्रुप का जो भी रहेगा उसका परमिशन क्या है. अब यहाँ पे परमिशन सिर्फ सेट किया हुआ है ओनली रीड, नो राइट परमिशन, नो एग्जीक्यूट परमिशन. ओके, नाउ द लास्ट टर्म रीड हाइफन हाइफन. नाउ दिस इज द फाइल परमिशन ऑफ अदर यूजर्स. अदर यूजर्स मतलब जैसे कि एक सिस्टम में डिफरेंट यूजर्स आर देयर, राइट. और भी जैसे आपने भी देखा है कि कॉलेज के सिस्टम में जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे APSIT एक लॉगिन रहता है, फिर कहीं पे गेस्ट लॉगिन रहता है, जो भी अदर यूजर रहेंगे, व्हाट इज द परमिशन फॉर देम रिगार्डिंग दिस फाइल, दैट विल बी मेंशन इन दिस थर्ड टर्मिनोलॉजी. ओके, so whenever you want to check, जैसे sometimes it happens कि you wanted to edit any file, you wanted to modify the file, and sometimes it happens कि आपने लिख तो लिया but it is not giving the permission denied, जिस तरीके के आपको messages मिलते हैं, result मिलता है, या you are not the owner of the file, you need to log in as a root, इस तरीके के जो messages आपको आते हैं, because that time you can check कि whether who is having the permission or who is the root user for this particular file. That you can check by running simply the command ls space hyphen l space and that file name. So you can simply check out the user of the file और कौन से group में belong करता है वो user, and the modification date of that file and the permission for that particular file. Okay, this is the file type. This first hyphen is the file type. Either this is a regular file, directory or the link. Then read write x, यहाँ पे अगर होता permission तो x होता वहाँ पे execute के लिए. ठीक है. Now suppose I just want to change the mode or change the permission of this particular file. ठीक है, change the permission of this particular file. अब यूजर का परमिशन क्या है, रीड राइट है. हाँ, आई वॉन्ट टू चेंज दिस विथ ओनली रीड. अभी राइट का परमिशन है. नाउ लेट मी शो यू. I want to write the contents into that file. So simply I can use the command nano. Okay, nano space file name. So it will open up the terminal editor. ठीक है, नैनो एक एडिटर है, कैट भी है एंड आपका टच, ये तीनों भी एडिटर है बाय यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ फाइल. ठीक है, सो व्हाट आई डिड कि मुझे टर्मिनल पे ही अगर लिखना है एज एडिटर, सो आई कैन यूज द नैनो कमांड, नैनो स्पेस दैट फाइल नेम. So even if the file is already created, it will simply open that file. And if file is not there with that particular name, then it will create first of all, and then it will open it for you. Okay, that is the use of nano command. Now it is open. Now whatever I want that I can write here, like I will write 0, then anything. Okay, I have written like some random stuff here in this file. Now what I want to do, simply I want to check whether I can write here and whether I can save this file or not. So to exit from this, Control X, so it will ask you save modified buffer. If you want to continue to save, then you can enter a yes. If not, then you can enter no, N. Okay, so I will be entering yes. Okay, it is asking file name to write 10. आपको file name वही रखना है. Yes, I want to
कीप दिस, सो एंटर, मतलब इसने सेव करके ले लिया, ठीक है, इसने सेव करके ले लिया। अब मुझे क्या, इसने लिखने की परमिशन दी उसको, व्हाई, बिकॉज यूजर हैज द परमिशन रीड राइट, फाइन। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू चेंज दिस परमिशन, राइट वाला परमिशन हटाना है, ओनली आई वांट टू कीप द रीड परमिशन, ओके। So we can do that by using the command chmod, okay, chmod. How to do that? As I said, there are three terminologies, एक तो user mode, then होता है group and then होता है other, ठीक है, यूजर, ग्रुप एंड द अदर, ये तीनों के परमिशन यहाँ पे मेंशन होते हैं। सो अगर आपको कुछ चेंज करना है देन यू कैन सिंपली डू इट लाइक यू इक्वल्स टू, आई वांट टू कीप ओनली रीड परमिशन, राइट, सो रीड परमिशन रखना है and I will keep remaining rest of the things, hyphen hyphen, then G equals to R hyphen hyphen, then O equals to hyphen hyphen, fine. Oh, okay, CHU equals to, मैम suppose, उसके बाद फाइल का नाम भी लिखते हैं हाँ ना? हाँ 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 हाँ, फाइल का नाम भी लिखेंगे as well as if R hyphen hyphen order equals to hyphen hyphen, and then I want to change, नहीं यहाँ पे सिंटैक्स में एरर आ रहा है, एक मिनट, इसके अंदर सेमी कॉलन होता है लेकिन लेट मी चेक, chmod, ये तो इसके नंबर से भी लिख सकते हैं, या जो नहीं लिखना है you just have to skip that one. So I want to write u equals to, I just want to write u equals to this, then G equals to be read, and then again O equals to also write, and then about the file 10, fine. Now how to check this, we can just check the changed permission by using the ls hyphen l and the file name. So you can see the difference in this here, in this permission and in this permission. First it was the permission of the user was to write, and here the permission is only available for reading. Now let me check whether now I can write the content into that file, nano 10, okay. अब मैंने क्या किया इधर, these are the previous contents, let me write ठीक है, control X, see I'm entering file name to keep this as it is, but it is not giving me the permission, error writing 10, permission denied, right, this is giving the error here below because I have changed the permission, right. So let me go back, control X, no I don't want to save, so I'm back to the terminal. Now let me change the permission again, read and the write, fine. So it will now it is the regular file, now I can make the changes. Now you can write or you can change the permission by writing this command also, equals to sign, या फिर इसे कुछ numbers भी allocated हैं, like read permission has the value 4, write permission has the value 2,
एंड एग्जीक्यूट परमिशन हैज हैविंग द वैल्यू 1, और अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई परमिशन नहीं है, हाइफन की जगह पे वहाँ पे अब 0 उसको कंसिडर किया जाता है, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे उस वैल्यू को. दैट मीन्स now here user has the permission of read and write. Okay, this read write is written. So read has the value 4, write has the value 2. So we can write this like 6 also. This can be represented with the value 6. सम करना है जो जो परमिशन है उसका. अब यहाँ पे ग्रुप की वैल्यू, ग्रुप का परमिशन है ओनली रीड, राइट. सो दिस कंटेन्स द वैल्यू 4 and the other is also having the permission of only reading, so the value is also 4. So we can simply if I suppose if I want to change this again, so I can write like this also, chmod, and the permission for the user I want to keep only reading, and for group I want to keep 6, सपोज ओके 5 भी चलेगा, रीड एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर. एंड ग्रुप के लिए सपोज मुझे रखना है सिर्फ रीडिंग, सो 454 विल बी द परमिशन विच आई एम चेंजिंग नाउ. ओके, chmod स्पेलिंग chmod 4510. ठीक है, अब देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं. ls-l ls-l and the file name. Yes, can you see this? Now the permission 4 means the first user permission is 4. 4 मतलब सिर्फ reading. 5 means read. 5 is read and the execute. 5 is read and execute and 4 is only read. ओके, ये बीच में हमने इसका राइट का कंटेंट हाइड कर दिया, मतलब राइट का परमिशन डिनाई किया है, सो इट इज रिटन लाइक हाइफन, राइट. लेट मी चेंज दिस. अगर सारे परमिशंस देने हैं, आई वांट टू कीप ऑल द परमिशंस टू ऑल द यूजर्स, यूजर को भी, ग्रुप को भी और अदर्स यूजर्स को भी, देन टोटल सबमिशन उसका 7 होता है, जो 777. So chmod 77710. If I will check this, ls-l 10. So this is like entire permission is given to this file. Okay. Now let me clear this. Now if you remember nano 10, कैसे लिखा है यहाँ पे कंटेंट? 0 एप्पल एपिसाइटी एनीथिंग ओएस बाय, इस तरीके के कंटेंट है. ठीक है. Now what I want to do, whatever the contents are present into that file, I want to sort the content of that file alphabetically. Okay, so simply what you can do, simply you can use the sort command by giving the file name sort space file name. Okay, so the content of that file will be displayed on the terminal by sorting all the contents alphabetically. ठीक है, एनीथिंग एप्पल एपिसाइटी, जो ऊपर नीचे रैंडमली लिखे हुए सारे कंटेंट्स थे अल्फाबेटिकली सारे सॉर्ट होके इट विल बी डिस्प्लेड on your terminal. Fine. Now this is about the basic of a file. Now moving towards the basics of directory. Basic command तो आपको पता ही होगा, mkdir to make the directory. Suppose I want to make a directory se, ठीक है, mkdir space and the new directory name, mkdir space directory name se. So it will create a directory. If I want to check whether it has been created or not, then I can run the command ls. So it will display. Now you can see se. Yes, here we have the new created se directory. Fine. Now here, if you see the terminal line, here we are present in my home directory, right? Now suppose I want to enter into this se directory. Now I can simply change the directory by running the command cd, that is the change directory. Okay, cd for change directory space the directory name, that is se. Fine. So enter. So now you can see the difference in the terminal line. एसी, अब हम किस में है? एसी के अंदर है. इफ आई विल रन द ls कमांड, अब हमने अभी तो क्रिएट की थी वो एसी डायरेक्टरी, तो उसके अंदर तो कुछ है नहीं, सो इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग. फाइन, नथिंग इज देयर. नाउ आई वांट टू कम बैक, या फिर मैं काम करती हूँ कि एक और डायरेक्टरी इसके अंदर बनाती हूँ, batch 1 mkdir batch 1. एंटर. ls. yes, now there is one more directory. Now simply go there in that particular directory batch batch 1. Okay, now we are inside of that batch 1. Fine. Now what I want to do, I want to
come out of this particular directory, एक से मुझे बाहर आना है. So what I will do, cd space dot dot, cd dot dot लिखोगे एरर देगा, ठीक है. cd space dot dot enter, एक डायरेक्टरी से हम बाहर आ गए. ना सपोज cd batch 1, अगेन आई वांट टू जंप इन. ना आई वांट टू डायरेक्टली कम आउटसाइड, मतलब ये जितने भी हिरार्की अंदर हैं उन सब से बाहर निकल के आना है मुझे, नॉट वन बाय वन. Simply you just have to run the cd command. Okay, so you will come out of all the directories. Fine. Now editors I have already अभी ये डिलीट करने के लिए ये you might be knowing this rmdir. अभी अगर मैं यहाँ पे batch 1 लिखूंगी तो it will give you the error because the directory where I am available or the होम डायरेक्टरी में जहाँ पे हूँ वहाँ पे ये बैच 1 नहीं है ना. सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी इट इज गिविंग द एरर. आई वांट टू गो फर्स्ट इन दिस हिरार्की एंड देन आई कैन रिमूव दिस फाइल. ओके, सो cd se, these are all the very basic commands but you need to know this. ये सारे माइनर जो भी सारे कमांड्स हैं जो आप यूज टू जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, यू वांट टू डील विद द file and the folder, and you when you are actually working as a system administrator, अब यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर जब आप काम करते हैं दैट टाइम यू नीड टू नो दिस. तो ये सारे कमांड्स से भी आपको बहुत फायदेमंद होते हैं. now here I can, if I will run this command, then it will delete rmdir batch 1. so if you will run ls command, let me change, this is the case sensitive. देखो अब कुछ भी नहीं है इसमें, so it has been deleted. cd space dot dot, so it will come outside. Now chat box में attendance mark करना, हाँ 5 minutes are remaining. Now suppose I want to check the users which are available in this system, जितने भी user की list है वो मुझे check करनी है. How we can do that? By simply running the command. Wait a minute. Let me clear this. Okay. Less, you can run the command less. Whatever the user details are there, जो भी आपके सिस्टम के यूजर्स रहते हैं जितने भी, उनके आईडी, उनके पासवर्ड will be present in the encrypted form obviously, but everything, the data is present into the /etc password file. So you need to run the command less /etc /PASSWD password. So it will display, it will run first of all this command and then it will give you, just a minute, screen में थोड़ा ये कर लेती हूँ. Now currently this is my user Sophia, and then the remaining rest of the thing is, this is my password which will be encrypted, and the path of this particular, the further details will be given about that particular user. Okay, now you need to exit this by control C और control Z. वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, it will simply open, it will give the details, and then you need to go out, come out of that particular file. Okay, now suppose I want to only display the user name. अभी वहाँ पे फाइल से रिलेट वो यूजर से रिलेटेड डिटेल्स भी सामने आ रहे थे, isn't it? So now simply I want to display the user name, तो I can run cat -d. ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद रह जाएगा. when you practice for number of times, /etc/password. okay, cat -d colon, cat नहीं है,
-f1 कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है /etc ओके हाँ जस्ट मिनट now it is displaying only the usernames not the details okay अगर details के साथ चाहिए then simply you can run this less command जो हमने पहले रन किया less space hyphen etc hyphen password sorry black